The question is like given a table, candidate of candidate and name and candidate ID and their skills. So you want to find a candidates who are proficient in Python, Tableau, and PostgreSQL. Write a query to list a candidate who possesses all the required skill. Okay. So this is the input table and output table is 1 2 3 because उसके पास पाइथन है, डब्ल्यू है, पोस्ट सीक्वल, तीनों 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 सब कुछ तीनों स्किल आता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिलेक्ट. सो मुझे चाहिए कैंडिडेट आईडी. कैंडिडेट आई विल सॉल्व बाय ग्रुप बाय. You can solve it using partition also, but group by will be easy for a beginner. Candidate id, so candidate id from क्या होगा, candidates. So what do we have to do now? And we need to find those candidate who have all three skill: Python, Tableau, and PostgreSQL. So where condition, where skill in Python, Tableau, and PostgreSQL. So that's it. And इसके बाद करना क्या है? After then group by. Okay, if I run this code, output will be this. Okay, so I have to group by using candidate id. Group by candidate id. Okay, group by, then output will be like this: 1 1 2 3 1 4 7 1 2 5 2 5 6 3 4 5. So I have to find those candidates who have all three skills. So we have to put having condition here. Having count, having count. अब कैंडिडेट आईडी बोल दो, count candidate id equal to 3. So after group by कैसा होगा कि 1 2 3 पाइथन, पाइथन टैबलू आ जाएगा, उसके बाद आएगा पोस्ट ग्रेड आ जाएगा. सो देयर विल बी थ्री डेटा field in 1 2 3 after group by. Okay, so if I apply count, then I can find there's how many rows are there in this group by. So there will be 3 rows, one for Python, one for Tableau, one for Postgres. So if I run this now, it will be okay. So देखो तो आगे आया मेरा आंसर, सबमिट करते हैं. तो एक्सेप्टेड. सो क्या किया मैंने, पहले मैंने निकाला कि पाइथन, टैबलू और पोस्टग्रे जो जिस बंदे का ये तीनों स्किल है उसको सब निकाल लिया. उसके बाद ग्रुप बाय किया, उसके बाद काउंट लगाया. तो पहले आपको फिल्टर करना पड़ेगा फायर से कि जो बंदे का पाइथन या टैबलू या पोस्टग्रेस है उसको निकाल लिया. उसके बाद ग्रुप बाय किया आइडेंटिटी से, उसके बाद काउंट लगा दिया. काउंट 3 बिकॉज 3 स्किल, जिसके पास 3 स्किल होगा ये तीनों, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे. तो दिस इज द, यू कैन ऑल्सो डू बाई वाया पार्टीशन, पार्टीशन से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा ईजी होगा आपको इनिशियली करने के लिए. तो थैंक यू गैस. और मैं जितना डेटा लेमर का जितना भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करते जाऊँगा, उसके बाद अपलोड करते जाऊँगा. यू कैन वॉच इट इफ़ यू